Welcome to SDMIC classes. Students must have the qualities of desire, decision and determination. If they have these qualities, such person with a willing mind, nothing is impossible to achieve. Chapter 2, Meaning and Fundamentals of Double Entry Bookkeeping, is Class 4. Hope you must have watched the previous classes and I believe you all must have understood. Now pay attention. We'll continue. In the last class I explained you classification of accounts as per traditional approach, and in this class I will explain you classification of accounts as per modern approach, the latest approach we can see. Classification of accounts are classified into 5 categories: assets, liabilities, capital account, revenue account, expenses account. So that means I will show you again classification of accounts. The accounts are classified into 5 categories: assets account, liabilities account, capital account, revenues and gains, expenses and losses. Now under assets, means what are the assets? Means जो भी अपने पास जो प्रॉपर्टी जो भी रहेगा, कैश रहेगा, ज्वेलरी रहेगा, बिल्डिंग रहेगा, कार रहेगा, जो भी एसेट्स है जो किसे लेना रहेगा, ये सब एसेट्स में आता है. लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर, डेटर्स, मतलब जिससे पैसा लेने का है वो. सो दिस कम्स अंडर एसेट्स. और लायबिलिटीज में क्या आता है? लेट्स सी. क्रेडिटर्स अकाउंट, दैट मीन्स जिसको देने का है, उधारी जो आपने जो लिया है वो पैसा देने का है, जो क्रेडिटर्स, अमाउंट पेएबल. एंड बैंक ओडी अकाउंट, सीसी अकाउंट. ओडी मीन्स ओवरड्राफ्ट एंड सीसी मीन्स कैश क्रेडिट. बैंक ओडी और सीसी अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब लायबिलिटीज अकाउंट में आता है. बैलेंस शीट में आई विल शो यू लेटर. बैलेंस शीट में ये जो लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट भी आता है एंड अदर लायबिलिटीज भी आता है. अदर लायबिलिटीज मीन्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज. कैपिटल अकाउंट बोलेगा तो ओनर्स फंड है, ओनर्स फंड विथ प्रॉफिट अक्रूड और सरप्लस एक्सेट्रा, जो भी है रिजर्व, सरप्लस जो भी है वो सब जो आके आते हैं वो कैपिटल जो अकाउंट होता है वो ओनर्स का होता है. और उसके अलावा जो भी देना रहेगा दैट इज वी कॉल्ड एज आउटसाइड लायबिलिटीज. ओके, कुछ आउटसाइड लायबिलिटीज बोलेगा तो उसमें ये भी आता है बाहर वाले को देने का है, लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो स्टाफ को या किसी को कुछ देना रहेगा या कुछ ड्यूज रहेगा वो भी आता है. ठीक है. आउटसाइडर्स बोलेगा तो जो जिससे हम लोग ने माल कुछ परचेज किया है, मटेरियल परचेज किया है, उसको देने का. और बैंक लोन, दैट्स ऑल्सो आउटसाइड लायबिलिटी. ठीक है, ये सब चीज़. सो लायबिलिटीज में क्या कैटेगरी में क्या आता है? क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक ओडी और सीसी अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट और एनी अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट, जिसे जो लोन इंटरेस्ट पे या किसी पे पैसा लिया है वो बैंक लोन. नॉट नेसेसरी दैट इज बैंक लोन. एनबीएफसी से आते हैं अभी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से भी हम लोग लोन लेते हैं. ऐसा भी हो सकता है या कोई प्राइवेट पार्टी से भी पैसा लेते हैं. ठीक है, दोज आर लायबिलिटीज. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलेगा तो विद इन द कंपनी और आउटसाइड द कंपनी कुछ जो लास्ट में कुछ देना रहेगा, थोड़ा कुछ बात ही कुछ. अभी फॉर एग्जांपल सैलरी है, रेंट है, वो जो देना रहेगा दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. नाउ कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? समझो कौन सा प्रॉपरेटर है यानी तो पार्टनर है. अभी इसमें कुछ 4 पार्टनर है. समझो आदित्यास कैपिटल अकाउंट, गिरीश कैपिटल अकाउंट, मिसेस हेमा ट्रेडर्स अकाउंट और मिसेस शर्मा ट्रेडर्स अकाउंट एक्सेट्रा जो आते हैं वो कैपिटल अकाउंट में आते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट किया है. ठीक है, कंपनी ये जो बिजनेस में. दिस इज कॉल्ड. और इफ इट इज अ सोल प्रोपरेटर तो प्रोपरेटर का ही अकाउंट, प्रोपरेटर का जो कैपिटल अकाउंट पैसा डाला है वो. ठीक है, और उसका जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता है वो सब, दैट इज कैपिटल अकाउंट. इन केस ऑफ कॉर्पोरेट कंपनी, शेयर होल्डिंग, शेयर जो शेयर कैपिटल होता है वो.
Otherwise, if it is a sole proprietor, it is own proprietor's capital account. If it is a partnership, जो भी उसमें इन्वेस्ट किया है, जो जितना जितना जन इन्वेस्ट किया है, it is not necessary that individual can invest. Any other business organization can also invest. तो वो इन्वेस्ट किया है वैसा, तो जो इन्वेस्ट करते हैं, जो बिजनेस जो चलाने के लिए, बिजनेस के जो कैपिटल के लिए जो इन्वेस्ट फंड करते हैं, उसका जो होता है कैपिटल अकाउंट. देन रेवेन्यूज एंड गेन्स. रेवेन्यूज एंड गेन मीन्स समझो सेल्स होता है, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब सेल्स, ये सब जो होता है रेवेन्यूज एंड गेन्स. और एक्सपेंसेस में होता है वेजेस अकाउंट, ऑडिट फीस, लॉस बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, परचेसेस, ये सब जो है एक्सपेंसेस अकाउंट्स में आते हैं. Okay. So it is clear. क्लासिफिकेशन अकाउंट्स में 5 कैटेगरीज में किया जाता है: एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट. सो नाउ दिस एग्जांपल्स भी दिया है. नाउ लेट अस एक्सप्लेन. All accounts are divided into 5 categories for the purpose of recording the transaction. ये जो मॉडर्न अप्रोच में, जो ट्रेडिशनल अप्रोच में मैं ऑलरेडी आपको लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छा तरह से समझाया हुआ था. नाउ दिस इज मॉडर्न अप्रोच. सो हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन अकाउंट. द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड based on these 5 categories of accounts, because accounts are divided into 5 categories for the purpose of recording transaction, namely assets account, liabilities account, capital account, expenses and losses account, revenues and gains account. Okay. Now, 2 fundamental rules to be followed to record the changes in these accounts. इसमें 2 रूल होते हैं. उसमें जो हम लोग ने जो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग ने क्या बोला था, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. ओके. एंड पर्सनल अकाउंट्स में जो जो रूल्स बताया था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. एंड रियल अकाउंट में बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. एंड नॉमिनल अकाउंट में बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ये जो बताया था. नाउ हियर 2 फंडामेंटल रूल्स के बेसिस पे अकाउंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंट्स को कंसिडर किया जाता है. 2 fundamental rules to be followed to record the changes in these accounts. For recording changes in assets, expenses and losses, for recording changes in assets, expenses and losses, increase in asset is debited and decrease in asset is credited. For example, कोई asset increase हो गया, assets जो add हो गया, मतलब कुछ asset आ गया, तो वो एसेट ऐड हो जाता है, तो एसेट आ गया, तो दैट शुड बी डेबिटेड. एंड डिक्रीज मतलब जो एसेट गया, फॉर एग्जांपल सेल किया, नहीं तो कुछ प्रॉपर्टी दिया, सेल किया या निकाल दिया, तो दैट इज गॉन, तो इट इज रिड्यूस्ड. सो एनी डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. गॉट इट नो? इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. सेकेंड, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड. मतलब जो भी खर्चा जो है वो ऑलमोस्ट मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ही हो गया ना. मतलब हम लोग ने जो नॉमिनल अकाउंट में बोला था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सेम वे हियर इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंस बढ़ गया. जो भी एक्सपेंस खर्चा करते हैं तो एक्सपेंस बढ़ता जाता है कोई भी तरीके से, लेकिन टोटल तो एक्सपेंडिचर ही होता है. वो एक्सपेंडिचर बढ़ते तो टाइम में दैट इज टू बी डेबिटेड. एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस और लॉसेस इज क्रेडिटेड. ओके. तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस and losses is debited and decrease in expenses or losses is credited. Okay. Now, for recording changes in liabilities and capital, revenues and gains. First point क्या था? For recording changes in assets, expenses and losses. Here just opposite. For recording changes in liabilities and capital, revenues and gains. Okay, so see
Now increase in liabilities is credited and decrease in liabilities is debited. Understand it properly. Increase, कोई भी liability बढ़ेगा, मतलब जो फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टर उसका जो इस कैपिटल के लिए कुछ जो फंड्स डाल दिया, कुछ इसके लिए एडिशनल फंड डाल दिया, तो वो बढ़ गया, तो दैट इज टू बी क्रेडिटेड. सेम में किसी से कुछ मटेरियल परचेज किया तो क्रेडिटर, वो उसको क्रेडिट कर, तो लायबिलिटी बढ़ गया तो क्रेडिट करना पड़ेगा. ओके, सेम वे जो बैंक कुछ से कुछ लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ गया तो इंक्रीज हो गया, तो उसको दैट इज टू बी क्रेडिटेड. तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज डेबिटेड. मतलब जिसको भी फॉर एग्जांपल बैंक को जो 10 लाख लोन देने का था उसमें से 5 लाख दे दिया, तो 5 लाख जो बाकी है तो लायबिलिटी रिड्यूस हो गया, तो लायबिलिटीज रिड्यूस हो गया तो करने का टू बी डेबिटेड. ठीक है, तो लोन अकाउंट टू बी डेबिटेड. Increase in liabilities is credited and decrease in liabilities is debited. Second, increase in capital is credited. अभी मैंने जो बोला था, मीन्स जो प्रॉपर्टर ने एडिशनल फंड डाल दिया या कोई पार्टनर्स ने एडिशनल फंड डाल दिया, दैट शुड बी क्रेडिटेड. कैपिटल बढ़ गया तो इंक्रीज इन कैपिटल हो गया, तो इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड. जितना मीन्स जो रिड्यूस हो जाएगा, जो कम हो जाएगा कैपिटल, तो उतना डेबिट होता है, उतना अमाउंट का डेबिट होता है. तो डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड. थर्ड, इंक्रीज इन रेवेन्यू और गेन्स इज क्रेडिटेड. मतलब जितना इनकम आया या रेवेन्यू आ गया, सेल हो गया, दैट शुड बी क्रेडिटेड. कमीशन रिसीव किया, शुड बी क्रेडिटेड. एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू और गेन इज डेबिटेड. जो अपना रेवेन्यू जो कम, मतलब एक्सपेंसेस हो गया ना, जो या नहीं तो जितना मीन्स जो रेवेन्यू आने का था वो उससे दैट इज रिड्यूस, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, दैट शुड बी डेबिटेड. वेरी क्लियर. नाउ स्टेट द टाइप्स ऑफ 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. नाउ we will just go through one example. Okay, I'll show you one example and we will just find out, because this is not that much difficult. It's a small chapter. Just explain the meaning and fundamentals of double entry bookkeeping. Once you know the meaning and fundamentals of this double entry bookkeeping, you can do any type of accounting work. Okay, but little bit further you have to just learn. That is the thing. Now commenced business with cash 70,000 rupees. Now what is here? Here it is mentioned cash. Otherwise it is cash or bank. वो उसने जो 70,000 rupees बैंक में डाल दिया, तो that comes into bank. Whereas it is mentioned here, commenced business with cash 70,000 rupees. So 2 accounts involved are cash account and capital account, because this is for what? Commenced business स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस चालू करने के लिए 70,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, डाल दिया कैश से, तो क्या करेगा? कैश आ गया तो कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड. नाउ डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया 10,000 रुपीज. तो यहाँ क्या हो गया? कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो क्या हो गया? बैंक में 10,000 रुपीज आ गया और कैश उतना रिड्यूस हो गया. इधर 70,000 कैश आ गया समझो, तो 70,000 में से 10,000 इसमें आ गया. बैंक में 10,000 रुपीज, बैंक ऑफ इंडिया में 10,000 रुपीज आ गया और 10,000 रुपीज कैश रिड्यूस हो गया, 60,000 हो गया बैलेंस. तो आई विल शो यू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एंड कैश अकाउंट. बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट. Withdrew cash from Bank of India for office use 5,500. Here again बैंक ऑफ इंडिया से कैश निकाल दिया तो कैश क्या गया? कैश आ गया. तो द अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट एंड बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट. ओके, तो फर्स्ट कैश अकाउंट 5,500 डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट. नाउ purchase good for cash 5,000. Here it is mentioned cash. If it is not mentioned cash, so it can be means जो purchase जो either materials जो किसे purchase किया रहेगा उसका नाम लिखा रहेगा, तो then say credit purchase, तो उसका नाम पे जाएगा. Here it is mentioned cash, तो purchased goods for cash 5,000 rupees.
तो अकाउंट इन्वॉल्व आर फर्स्ट परचेस अकाउंट एंड कैश रिड्यूस, कैश अकाउंट, कैश दिया तो परचेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट. Now purchase goods on credit from Kiran stores. अभी जो फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं मैंने बोला था जो कैश पर्टिकुलरली मेंशन किया है. Whereas in the fifth point purchase goods on credit from Kiran stores, यहाँ कैश या बैंक कुछ दिया नहीं है, बैंक से कुछ पेमेंट नहीं दिया है, पेमेंट विल बी डन लेटर. ओके, दैट इज अ क्रेडिट परचेज फ्रॉम किरण स्टोर्स. तो यहाँ क्या होगा एंट्री फर्स्ट परचेज अकाउंट एंड सेकेंड entry Kiran stores account. So purchase account first account involved and second involved is Kiran stores account, purchase account debit and Kiran stores account credit. Now sold goods for cash 3,000. Now here again it is mentioned cash sales. So cash account and sales account. Okay, so cash account debit and the sales account credit. Now sold goods to Rohini 9,000 rupees. So here it is not mentioned cash. So it should be considered as credit sales. Okay. So the account involved is Rohini's account and second sales account. Okay, Rohini account debit to sales account credit. Now 8, received dividend 4,500 rupees. So here what received? Here nothing is mentioned. So cash or bank account to cash or bank account, second account involved is dividend received. Cash or bank account, because here nothing is mentioned. Cash received या बैंक cash से आया है क्या, बैंक से आया है क्या, कुछ पता ही नहीं है. So we are taking either it has come through cash or it has come through bank. Okay, so dividends received 4,500. The cash or bank account debit, cash or bank account, and the second account involved is dividend received. Okay, dividend account. Now paid audit fees 1,000 rupees. Here also nothing is mentioned. Cash or bank से दिया है, चेक दिया है क्या, या ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया, या कैश दिया है क्या, चेक दिया है क्या, ऑनलाइन ट्रांसफर किया क्या, कुछ मेंशन नहीं किया है. सो व्हाट वी विल डू, what account involved is what is expense, no? So audit fees account to cash account, audit fees account second cash or bank account. So audit fees account debit to cash or bank account. So now it is clear. Now we will just explain the accounting. Now we will explain the accounting equation. Okay. Accounting equation signifies that assets of a business are always equal to the total of its liabilities and capital. Accounting equation signifies that assets of a business are always equal to the total of its liabilities and capital. तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताता है, एसेट्स कोई भी बिजनेस का जो एसेट्स जो होता है, एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटीज होना चाहिए. तो वो बैलेंस शीट बोलेगा तो एकदम बैलेंस होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आप कुछ वेइंग जो कर रहा है, तो एक दो पैन वाला है, तो उसमें एक साइड में वजन रखता है और दूसरे साइड में मटेरियल रखता है. अगर एग्जैक्टली बराबर आना रहेगा तो उतना है अमाउंट डालना पड़ेगा. पर इवन थोड़ा सा भी 0.01 ग्राम भी कम रहेगा तो वो बताएगा, और थोड़ा सा मीन्स जो ज़्यादा रहेगा तो भी बताएगा. सो दैट शुड नॉट हैपन इन केस ऑफ बैलेंस शीट. इट शुड बी इक्वल, दोनों एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए. और व्हेन वी मेक द बैलेंस शीट देयर शुड नॉट बी ए सिंगल पैसे डिफरेंस. वो एग्जैक्टली इक्वली बैलेंस होना चाहिए. ओके, नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बताता हूँ. द इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ये अच्छा से आप सीख लो क्योंकि दिस इज द बेसिक इक्वेशन. ओके, दिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल. ये यूनिवर्सल लॉ प्रिंसिपल ही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते. एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ओके, and then second
The fundamental equation gives the foundation of the double entry bookkeeping system. ये जो fundamental equation gives the foundation to the double entry bookkeeping system. Double entry bookkeeping system का fundamental base ये है, ये जो equation है, assets is equal to capital plus liabilities. So always assets is equal to liabilities, debit is equal to credit. और कोई भी entry pass करेगा, ये जो कोई भी transaction का entry pass करेगा, there will be two effects. That is double entry bookkeeping system. You know that, no? For any transaction when we make that entry, there should be two effects should be given for the entry. For example, purchase रहेगा, तो if it is a cash purchase, cash जो purchase account debit and the equal amount to be credited to cash account. अगर या कुछ सेल कर रहा है, जो क्रेडिट पे सेल कर रहा है, फॉर एग्जांपल समझो, तो जिसको जो सेल कर रहा है उसको डेबिट करेगा और उतना ही अमाउंट का, जो सेल अमाउंट का उतना ही डेबिट करेगा, उतना ही सेल्स को क्रेडिट करेगा. सो दैट गिव्स अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. तो ये जो वही बेस होता है. तो आपका जो सिस्टम प्रॉपर अगर अकाउंटिंग करेगा तो बैलेंस शीट एग्जैक्टली टैली हो जाएगा. सो ये जो इक्वेशन आपको जो दिस इक्वेशन कम्स टू द फैक्ट प्रूव कर सकता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज. कैपिटल इज इक्वल टू, अभी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. सो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. अंडरस्टैंड? So the accounting equation में, so just see, assets is equal to capital plus liabilities. So capital is equal to assets minus liabilities. It's so simple. So assets is equal to capital plus liabilities. Okay. So we have completed the theory part. मैंने आपको एक example बताता हूँ, ठीक है? ये जो कैपिटल है, कैपिटल इज इक्वल टू समझो 5 लाख, ठीक है? लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज आउटसाइड, बिकॉज दिस टोटल कम्स अंडर लायबिलिटीज. सो आउटसाइड लायबिलिटीज इसमें बहुत सारा आ जाता है, बैंक लोन आ जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारा क्रेडिटर सप्लायर से सब आ जाता है. वो रहेगा समझो 5 लाख, ठीक है? और नाउ एसेट्स में जो बिल्डिंग, फर्नीचर और फिक्स्ड एसेट्स समझो, एसेट्स आया समझो 4 लाख, ओके? और समझो रिसीवेबल आ गया, सब अदर असेट्स, करंट असेट्स. करंट असेट्स में बहुत सारा आइटम्स आ जाता है, रिसीवेबल आ जाता है, स्टॉक ऑफ गुड्स आ जाता है, और सम अदर जो भी रिसीवेबल रहेगा, जो भी आप कंपनी के पास रहेगा, गुडविल रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो सब करंट असेट्स में आ जाता है. तो करंट असेट्स आ गया 6 लाख, ठीक है? टोटल कितना हो गया? इसका टोटल हम लोग ने लिया I have explained you ledger, format of ledger. This is the format of ledger. This is already we have explained. This left side is debit side and right side is credit side. This is a one page actually.
and at the center of the page there will be a double line, and the right side it is credit side and left side is debit side. This is the format of the ledger. Okay, now also explain the profit and loss account part. Okay, here I will show you the accounting equation with example. Accounting equations with example. This I made for an example to explain you, to illustrate you, to आप लोगों को समझाने के लिए जो बनाया है. ये समझो, ये this is ABC Chemicals Private Limited, for the balance sheet of ABC Chemicals Private Limited. Balance sheet has on so and so date. Now see, this is a capital of capital, share capital. Since it is since it is a capital, is a owner's fund, it cannot be a private limited company. Then if it is a private limited company, this will be share capital. Okay, it will be called share capital. Once it is a capital, it will be either a partnership concern or a ownership proprietary concern. So capital here it is mentioned is 2 lakhs, and fixed assets 4 lakhs, current assets is equal to 6 lakhs, and outside liabilities is equal to 8 lakhs, total 10 lakhs. So balance sheet, you see these both are equal. Suppose if there is समझो I am putting here 100, समझो the difference is coming, this minus this is equal to this. So if to equate that, there should be an equal of assets here. Okay, so this is equal. Whereas if I just remove this, so here it is coming again difference. The balance sheet means there should not be any single paise difference. Okay, so for example 1 rupee difference रहेगा, तो उधर 1 rupees आ गया, इधर 1 rupee difference आ गया, ठीक है, तो वो 0 हो गया, समझो ये माइनस हो गया, ठीक है, like that it is. ये सब ये बोलने का है कि दोनों साइड इक्वल होता है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल हो जाता है. दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट का जो अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आप लोगों को समझाया था. असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज. असेट्स जितना है उतना ही लायबिलिटी होना चाहिए. लायबिलिटी में देखो ये ओनर्स फंड है, ये पैसा इन्वेस्ट किया हुआ वो फंड है. तो ये जो फंड जो है दिस इज इंटरनल, मतलब जो प्रॉपर्टर का खुद का है, ठीक है, उनका खुद का पैसा है. whereas the other liabilities are for outsiders. This outside liabilities में कभी जो स्टाफ का ये सब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का भी होते हैं, और बाकी जो बाहर वाले को देने का होता है, बैंक लोन रहता है, जो सप्लायर्स को जो पैसा देने का वो सब होते हैं, तो वो सब ये होते हैं. सो दिस कैपिटल जो ऑनर्स फंड, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट फंड, जो ऑनर्स कितना, ऑनर जो खुद का कितना पैसा लगाया है वो पैसा प्लस बाहर का जो देने का है, वो सब मिला के टोटल लायबिलिटीज आ जाता है. तो लायबिलिटी साइड, ठीक है. असेट्स में जो भी है फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, ये सब मिलके आ जाता है, ठीक है. तो होना चाहिए, ठीक है. दैट इज द सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. नाउ द अकाउंटिंग इक्वेशन में जो बैलेंस जो इक्वेशन में असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो टोटल लायबिलिटीज कितना है 10 lakhs, और टोटल असेट्स कितना है 10 lakhs टोटल. ओके, इसमें से अपने को कैपिटल फाइंड आउट करने का है. तो क्या करेगा, इक्वेशन इज कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. असेट्स कितना है 10 lakhs, ठीक है. ये 10 lakhs असेट्स है. 10 lakhs में से आउटसाइड लायबिलिटी कितना है 8 लाख. ये 8 लाख माइनस किया तो बैलेंस कितना है, दैट इज कैपिटल. कैपिटल आ गया, ठीक है. दिस इज द वे टू फाइंड आउट. ये अभी समझो ये लायबिलिटी सॉरी कैपिटल लिया है और असेट्स दिया है, तो आउटसाइड लायबिलिटी कितना है मालूम पड़ने के लिए देखो, आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल. टोटल असेट्स कितना है उसमें से कैपिटल माइनस करेगा तो आउटसाइड लायबिलिटी आ गया. तो दिस वे इट इज वर्कड आउट. इतना ये है. अभी समझो टोटल लायबिलिटी दिया है, टोटल ये जो कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज मिलकर 10 lakhs आ गया. तो असेट्स कितना है उतना ही असेट्स होगा, मतलब जितना टोटल लायबिलिटी साइड में जितना टोटल है उतना असेट होगा. दैट इज द इक्वेशन. ओके, दैट इज असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज. ओके, नाउ दिस इक्वेशन यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. कैपिटल इज असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज. जितना असेट्स रहेगा उतना लायबिलिटीज भी होना जरूरी है. ओके, देन ओनली इट इज कॉल्ड अ बैलेंस शीट.
नो कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, उसको अभी मैंने एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन किया है. टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज इक्वल टू बैलेंस इज कैपिटल, और टोटल जो आउटसाइड लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल. टोटल असेट्स कितना है उसमें से कैपिटल माइनस करेगा, बैलेंस आउटसाइड लायबिलिटीज आ जाता है. ओके, so now we will finish this class here today. Then we will continue with one more lecture, and then one more part we will complete, and then we will wind up this complete this chapter. Okay, theory part is already completed. Now this example I explained. One more part I will take in the next class, and then we will complete this chapter. Okay. So now we will wind up this class here. As usual, I request all my students to study regularly. If you don't understand, watch again and again, because I want all my students to score full marks in the subject, or just close to 100% marks. Above all, you must have a strong base in the subject that decides your career ahead, what you have to do in future, going for higher studies, CA, ICWA, management, CMA, etc. It means any course you want to go and decide what you have to do, you must have a strong base. So I'm making a strong base for you with a professional touch. Please read again and again, learn and practice to achieve your life's goal. My message is help each other to grow together for a better India. India needs more talented and young, educated young people, young students and young workforce. So education is more important, and while you have a strong base and you have a very good high qualification and professional qualification, good education, good though you can have a good job or you can do business, because India's economy is growing very fast. Accordingly, there may be so many requirements of manpower, talented and highly skilled job opportunities are coming up, and also there are several business opportunities coming up. So learning commerce also helps to do business. Okay, most of the secrets of the business, the basic secrets of the business you are learning while doing it, means this is commerce, education and all. Higher going for a CA or a CMA or management, you will be learning that. So we need so many talented and highly skilled young workforce. So please help each other, pass this to many students so that they can also learn from these classes. I request you all to share the classes to reach more and more students so that many students and public can take the benefit. ये इसका बेनिफिट बहुत जन ले सकते हैं. बहुत सारा पब्लिक ऐसा मीन्स जो स्टूडेंट्स रहेगा वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाएगा, या बहुत जन है ना ऐसा क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं. बहुत जन आई नो दैट मीन्स बिकॉज आई ऑल्सो केम थ्रू योर मीन्स पाथ नो, बिकॉज some 38 years before, 40 years before, I was also like you, means you are in your age, and I was also means bunking some classes. So it's not it is not advisable, but still that was the many students can may miss or due to some other problems, and many students may not be able to go for a tuition class or something. So they can use this class as an advantage. And if those students having money also, they can also watch and just learn from these classes. And those who are doing correspondence education, because they may have some financial difficulties and all, they can also use this class. Postal education students, correspondence students, and many students may be working along with the classes and maybe attending night classes, or maybe appearing for private exams, studying private and then appearing for exams. So those students also can use these classes and take the benefit. So that my request is that as much as possible you share this to many students, that will generate more talented and young skilled manpower. Please subscribe and share to your contacts. अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग का कॉन्टैक्ट्स को
शेयर कर लीजिए so that it will benefit. Thank you.